किसी तरीके से तैयार अपने मैनिफेस्टो के अंदर दिखलाई पड़ती नहीं। जो जीएम क्रॉप्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे विदाउट फुल साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सॉइल प्रोडक्शन एंड बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। मतलब ओपन छोड़ा है, उन्होंने क्लियर कट मना नहीं किया है। और आम आदमी पार्टी ने भी उसे रेगुलेट करने की बात कही है, उन्होंने भी उसके ऊपर बैन लगाने की बात नहीं की। केवल समाजवादी पार्टी ने उसके ऊपर रोक लगाने की बात की है। और वो जब पहले भी सरकार में थे तब उन्होंने रोक लगाने का काम लिखित तौर पर भारत सरकार के साथ में फॉलो अप करने का काम किया था। इसी के साथ साथ में जुड़ा हुआ जो मसला है, जो बात का जिक्र आपने किया, WTO का मसला, AOA का मसला, उस मसले को लेकर भी केवल लेफ्ट पार्टीज की क्लैरिटी है। CPM ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, दोहा राउंड को लेकर के बोला है, एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट को लेकर बोला है, या FTA जो है उसको स्क्रैप करने की बात फॉरवर्ड ब्लॉक में उठाने का काम किया है। लेकिन जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग इस बारे में साइलेंट थे। मतलब ये है कि जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसी लाइन को ही आगे बढ़ाने की बात है। और क्योंकि किसान एजेंडा जो किसान संगठनों ने मिलकर के तय किया था लखनऊ में WSF प्रोसेस के प्रक्रिया के अंदर, उसके अंदर भी टॉप मोस्ट जो एजेंडा आया था वो खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन को रोकने का सवाल, वो सबसे बड़ा सवाल है, इस तौर पर आया था। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके इस खतरा, जो सबसे बड़ा खतरा है खेती किसानी को, उसके प्रति चिंतित दिखलाई नहीं पड़ती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में भी किसी भी पार्टी ने जो दो बातें थी, एक बात यह कि कृषि योग्य जमीन को का एक्विजिशन ना हो और ग्राम सभा की बिना अनुमति सहमति के ना, ये दो बातें सबसे मुख्य जो बातें थी, उसको उसी तरीके से अपने मैनिफेस्टोस में रखने का काम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनमें से किसी ने भी नहीं किया है। जिसका मतलब यह है कि मोटे तौर पर जो अधिग्रहण का जो नया कानून आया है उसको सब लोगों ने स्वीकार करने का काम किया है। जबकि अब जो सबसे बड़ा खतरा है अगले 5 साल का, वो पूरे देश के अंदर अधिग्रहण का ही खतरा है। और अकेला जो ये पूरा कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर या दिल्ली पूरा जो पूरे हिंदुस्तान का लगभग 20-30% ऑफ लैंड, ये जो एक्विजिशन होने जा रहा है अलग अलग हाईवेज के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके ऊपर की ये भी कानून लागू नहीं होता है, उसको लेकर भी कोई भी चर्चा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इसके अंदर की नहीं गई है। मैं इसके साथ साथ में केवल कुछ इंटरेस्ट रेट्स की बात सबने कही है, कंसेशंस हम लोग देंगे इसकी बात कही है। मनरेगा के अंदर इसको जो जोड़ने का सवाल है कि एग्रीकल्चर का जो पूरा काम है वो मनरेगा के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा सवाल आ गया है, मनरेगा ने जो एक मतलब जो खेती किसानी के अंदर लेबर का, जो श्रमिक का, खेती और मजदूर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। और अगर उसको नहीं चेक किया जाएगा तो उसका खेती के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और इसलिए मनरेगा को जो भी कुछ काम है एग्रीकल्चर का, उसके साथ में इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी केवल चर्चा हुई है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल जी, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं तो जी इसकी इम्प्लीकेशन जो है एग्रीकल्चर लेबर के लिए बहुत खराब है जी। आप मनरेगा को एग्रीकल्चर सिस्टम 1000 वेज में कनेक्ट कीजिए, बट डू नॉट अलाउ फार्मर टू यूज मनरेगा फॉर सप्लाई ऑफ लेबर। जी, खैर उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। CPM ने जो बात खेती और मजदूर की जो मिनिमम होना चाहिए वेज 300 रुपए दिन की बात कही है, लेकिन यही सवाल किसानों के लिए भी उसकी कोई एक मिनिमम इनकम होना चाहिए। जो बात हम लोग बार बार हर समय कहते रहे कि जो एक केंद्र सरकार का जो सबसे निम्न उसका जो कर्मचारी है, मतलब चौथा तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है, उसे न्यूनतम अगर 10,000 रुपए मिलता है तो फिर कम से कम वो 10,000 रुपए का न्यूनतम इनकम इंश्योर करने का काम फार्मर्स के लिए भी होना चाहिए। इस तरीके का कोई भी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में, सभी जानते हैं कि मैनिफेस्टो का कितना उपयोग होता है, लेकिन वोट लेने के लिए भी
झूठ बोलने के लिए भी, सपना दिखाने के लिए भी मिनिमम इनकम की बात हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करने को तैयार नहीं है। मुझको लगता है कि जो मैंने सभी मैनिफेस्टोज पढ़े हैं उसमें जो सबसे प्रैक्टिकल बातें मैंने देखी खेती किसानी के साथ में जुड़ी हुई, वो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में देखी है। वो बात का उल्लेख करना यहां पर इसलिए जरूरी है कि जो बहुत छोटी है कि खाद का बीज का समय से किसानों को मिलना, ये इस देश के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट्स के माध्यम से जो भी मिलता है वो समय के बाद में मिलता है किसानों को, और उसके चलते उनकी पूरी खेती सफर करती है। बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे तक को समाजवादी पार्टी ने छुआ है। या ये जो एक इंश्योरेंस की बात है कि किसान की अगर मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाए, ये बात भी किसी दूसरी पार्टी ने इसका उल्लेख करने का काम नहीं किया। इंश्योरेंस के अंदर सरकार के द्वारा किस्त भरी जाएगी, ये बात भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने करने की बात नहीं की है। सबने इंश्योरेंस को बढ़ाना और सब कुछ कहा है, लेकिन आखिरकार कौन देगा उसकी किस्त, प्रीमियम कौन देगा, है ना? किसान नहीं, सरकार देने का काम करेगी। इसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। या फिर भूमि सेना की जो पूरी बात है कि जो जमीन खेती योग्य नहीं है उस जमीन को खेती योग्य बना करके और लैंडलेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाएगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको भी समाजवादी पार्टी ने ही इसके अंदर देने का, और ये बागवानी को लेकर के, हॉर्टिकल्चर को लेकर के उसको बढ़ावा देने का स्पेसिफिक, पशुपालन को लेकर के कुछ बात कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आई, लेकिन बागवानी को लेकर के किसी भी मैनिफेस्टो के अंदर कोई बातचीत आई स्पेसिफिकली नहीं आई है। तो उसको भी समाजवादी पार्टी जो है उसने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझको लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं किसानी से जुड़े, किसान और गांव के साथ में जुड़े, जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये तो अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर मैं लगातार पिछले 1 महीने से घूम रहा हूँ। मैनिफेस्टोज के ऊपर अभी आए भी नहीं थे और कोई चर्चा भी बहुत ज्यादा थी नहीं, और सक्सेना साहब से मैं सहमत हूँ कि जनता भी बहुत ज्यादा देखती नहीं है और नेता भी और पार्टियां भी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। यहाँ पर जो आयोजक साथी हैं उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सीरियसनेस इस बात से तय होगी कि आगे वो इसका क्या फॉलो अप करते हैं। जो सरकार बनती है उसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर, और आगे जाकर के ये सब पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं होने वाली हैं, कम या ज्यादा रहने वाली हैं, तो उनको पॉलिसी लेवल पे किस तरीके से उनके साथ में हम लोग ज्यादा इंटरेक्शन हम लोग कर सकते हैं और जनता के सवालों के ऊपर ज्यादा मैनिफेस्टोज के माध्यम से उन पार्टियों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। मुझको लगता है कि इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, और आने वाले समय में जब भी ये WSF वाला प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर से एक ऐसा मुद्दा होगा जिसमें सब लोग इकट्ठे होंगे, तो उसमें भी सब लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग करेंगे। बस समय आपने दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी, बहुत संक्षिप्त में और डिटेल में भी बताया। और ज्यादा आप सुझाव है वो थोड़ा इस बारे में डिस्कशन होना पड़ेगा। इस बारे में भी फ्रॉम द एंगल ऑफ सोशल जस्टिस भी हम करना है, क्योंकि लैंडलेस, दलित, and I think there are certain inherent contradictions there that we'll have to see, and वो भी करके देखना है। I'll just share from the perspective of social justice, and then after this I think we'll break for tea. Very quickly, what is very apparent in all the manifestos is सोशल जस्टिस एक अलग तरीका वो दिखा रहा। They are just putting aside social justice in a very exclusive and in one unconnected or disconnected fashion. Whereas one needs to ensure that in all the sectors there has to be proper inclusion. You will see inclusion mostly talking about Dalit, Adivasi, Muslim in one section. I think all the parties
have done that. And this is a sad thing because you will not have clear social justice if you don't include them in the growth, if you don't talk about that in education, in health. I think education, fair enough, I think there is some mention of that, but definitely on the issue of health, on the issue of food security, land and forest to a certain extent, but the other aspects I think have not clearly come in. That apart, somehow there is not sufficient understanding of the aspect of social justice. If you unpack some of these, like for example, just looking at the concept of National Skill Development Commission, and you are appalled to see, if you look into what they actually mean, they are not talking about cutting edge inclusion in the growth. What they are training is, and this I think has also been brought out earlier, they are training in security, they are training in domestic servants, they are training in some odd things which really you don't need that kind of an effort to be brought in. So, somewhere when you are saying you are trying to skill the communities, and especially with some focus on the marginalized communities, but still what you are training is only training for, again, slaving kind of occupations. And for that you don't need a skill commission. I think it is brought out in Congress, and that's the government which now has this huge skill development committee or council which talks about lakhs and lakhs of people, and they are doing it with the corporate, and the money is going to the corporate, but somehow it's not being done. And this is the kind of a thing that you would see right through. But quickly looking at the Dalit, Adivasi, Muslim section of all the four party manifestos, which is Aam Aadmi Party, CPI, CPM, BJP and Congress, must say that the broader perspective is much more with the CPM. They come with the perspective of those from the margins, especially in most of the aspects, whether it is in the whole area of a central legislation. One of the crucial things which Congress has promised, have not brought it, but the legislation for special component plan and tribal survey, which is, I think, a critical element for any development to take place. I think that's fairly captured by CPM, offered by, also promised by Congress, but others have really not focused on this. I think that looking at it, then also need for strengthening the Prevention of Atrocities Act, and some of the other aspects I think have been very clearly put in. One is shocked at the Congress's starting of the social justice, of the Dalits. What they say, first their opening remark is that they will ensure reservation on economic criteria without affecting the quotas for the SCs. So why do you have to get into that debate? Because this is the same thing that they are trying to do. I think there is a huge war within the Congress, which Janardhan Trivedi has tried to come up, and I'm sure he, being an official spokesperson, could not have made such a kind of thing where we will do away with the focused targeting of development for the scheduled caste, scheduled tribes and with reservation, and going for a class-based or on an economic criteria. So
somewhere this dilemma is also brought in, even though you have some quite pertinent aspects within the Congress manifesto. It starts with this. The same dilemma you see it in the BJP's manifesto, which of course is quite empty when it comes to the Dalits, Adivasis, Muslims. I think Abhay will share on the aspect of Adivasis, which I will not mention here. But there also they put harmony, social harmony as opposed to social justice. Now why do you talk about, of course there has to be harmony, but why do you pitch justice issue and presume that it is going to affect the harmony? And so between these two, they have clearly seen that the emphasis is more on social harmony rather than ensuring social justice, which is still such a shame. Of course, you find this aspect not at all dealt with in the Aam Aadmi, and though they mouth certain things, they are quite generic, except for certain specific aspects like schools. And one, I think we should really, and we are just writing a letter to them, saying that in the whole aspect of regularizing Safai Karmachari, they would want that this aspect of Safai Karmachari, I will just read that out to you. That they want regularization of the sewerage work, where protective gear for sewerage workers. Somehow they are not captured what is at the root in this. That we want this to be full stop. I mean, you need to take it out. You have to have a different whole system put into clearing sewerage, clearing this whole manual scavenging aspect. Instead, they would like to regularize this and then have some protective gear and make sure this continues. I think this comes out of clear ignorance of the aspects and initiatives for the scheduled castes and scheduled tribes. When you look at the entire aspect of education and health. Education, I think there is a little bit of a inclusion, but when you look at healthcare, when you look at food security, the whole aspect of non-discrimination and substantive equality does not figure in any of the manifestos, except I think somewhere AAP comes out, says that we need a kind of a debate on the issue of caste discrimination, which and root it out. Except for that, you don't see here any issue where they would try to ensure that the aspect of still the gross discrimination that is there to be taken out. If you look at the BJP manifesto, except for certain aspects of mission mode project for housing, education, health and skills development, the broader aspect of social inclusion does not arise at all, and much worse with the aspect for the tribals. I think it is somehow it has totally reversed their identity and issue for self-rule and made it quite a dangerous policy for the tribals. So on the whole, somehow I think we need to ensure that there is a greater debate on social justice, and it is done in a very exclusive way. They have still not gotten into looking at the entire discrimination that exists in the wider society, other than the physical discrimination, physical violence.
no party mentions of the wider discrimination that exists in the market or in the other aspects like in education, in access to health. I think some of these will need to be brought in, and it's quite disappointing that despite the several rounds of, one thing must acknowledge is Congress, I think, has had several, like something like 26 series of discussion on various thematic and regional aspects. Many of them, I think, have brought in, but they have, in the end, when you see that, it has been watered down. So these are the few aspects that one could say as far as the social justice. On the whole, quite disappointing, and there is a lot more I think that needs to be done, and this needs to be taken up as an agenda, and request all the sectors to ensure that we can imbibe aspects of social justice into this. So friends, with this, shall we, I think you're opening up the floor towards the end for the questions. Yeah, But because tea is getting cold. Yeah. So we can take some time. Yeah. So we come back to 15, 20 minutes? 15 minutes? 50. 1 5.